जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम कर रहे हैं हमारा SOC 101 का लेक्चर 28। जी तो स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारा है फंक्शंस ऑफ फैमिली, regulations of sexual activity. Every culture regulates sexual activity in the interest of maintaining kinship, organization, and property rights. One universal regulation is the taboo, the cultural norm forbidding sexual relations or marriage between certain kin. Precisely, which can fall within the incest taboo varies from one culture to another. Mostly marriage with close relatives like parents, grandparents, aunts, uncles, siblings is prohibited. Next है production. Perhaps the only function that seems to have been left to a great extent untouched is reproduction. Without reproduction, the continuation of society is at stake, and the legitimate births take place only within the word clock, wed clock. In fact, family socialization continues through life cycle. Adults change within marriage as any parent knows. Mothers and fathers learn as much from raising their children as their children learn from them. उफ सॉरी हम तो यहाँ से नहीं यहाँ पे पढ़ रहे थे. Yet even this vital in and inviolable function has not gone unchallenged. A prime example is the number of single women in the Western society who have children. About one third of all births in US. Socialization of children. The family is the first and most influential setting of for socialization. Ideally, the parents teach children to be well integrated and participating members of society. ये हम यहाँ से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, हम नहीं पढ़ते हैं अब. ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास सोशल प्लेसमेंट.
अच्छा, ये 5 6 7 ठीक है। हम्म, अच्छा, फैमिली फंक्शंस ऑफ फैमिली हैं ये, ठीक है। इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। ये रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, reproduction, socialization of the children, social placement, care of sick and elderly, protective function, economic production. नेक्स्ट ये हमारे पास केयर ऑफ द सिक एंड एल्डरली family has been a big insurance against the old age and as well as during sickness. As the society moves towards the industrialization, this function is likely to be taken over by initialized medicine and medical specialists. Care of the aged is likely to change from a family concern to a government obligation. In Pakistani society, by and large, it remains to be an important function of the family. Protective function, family provides some degree of physical, economic, and physiological security to its members. Attack on a person is considered to be an attack on the family. Similarly, guilt and shame are equally shared by the family. People view the family as heaven in the heartless world. Looking to kin for physical protection, emotional support, and functional assistance. People living in families tend to be healthier than living alone. Economic production prior to industrialization, the family constituted an economic team. Family members cooperated in producing what they needed to survive. When industrialization moved production from home to factory, it disrupted this family team and weakened the bonds that tied family members together. In Pakistan, family still performs an important function at least in helping its members in establishing their careers and obtaining jobs. नेक्स्ट है हमारा लेक्चर 29, फैमिली एंड मैरिज इन ट्रांजिशन. Let us look at some of changes that are being experienced by the family and marriage nationally and internationally.
ये है हमारे पास फैमिली इज लॉस्टिंग फंक्शंस families are exerting less influence over the lives of their members. A shift toward an unclear or conjugal families, kin networking fading and being replaced by friends networking, declining size of families, the rise of symmetrical families, patriarchy on the decline. Arranged marriages are being replaced by marriages of inclination. In the Western societies, alternative marriage arrangements are on the increase. Women empowerment. Divorce rates have been increasing. Lone old parent families on the increase. Awareness of family violence has increased. The number of elderly marriages and remarriages is increasing. Monogamy presumably becoming universal. जी तो ये इसके हैं 15 पॉइंट्स, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स को ख़ास कर बहुत अच्छे से जो है करना है याद, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको। Accept the procreation of children. For all other functions, it appears that other institutions are taken over the traditional functions of the family. In the developed countries, families have accepted such a takeover, whereas in Pakistan, such a change is fast coming. यह हमारा फैमिली इज़ लॉसिंग फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर है फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड mass media of communication are becoming powerful agents of socialization of children. अब इसमें होता क्या है, लॉस्टिंग फंक्शंस जो जैसे पहले थे कि उनके कुछ रवाज वगैरह थे, ठीक है। तो वो उनकी कुछ अच्छे भी होंगे और कुछ गलत भी होंगे, ठीक है। वो सारे के सारे जो थे वो रिप्लेस हो गए किसके साथ, जो हमारा मीडिया है, मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, उसके साथ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ। क्योंकि वहाँ एजुकेशन जो होती है वो इंसान को जो है वो तहम्मात से दूर करती है, और जो कम्युनिकेशन मीडिया है वो जो है वो नई नई जो चीज़ें हैं वो सामने ला रहा होता है, ठीक है। तो जो आजकल की जनरेशन है वो उसके साथ चल रही है, जो उन लोगों के जो पहले जो चीज़ें थी उनसे दूर हो चुकी है, ठीक है। यही है फैमिली इज़ लॉसिंग फंक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास families are exerting less influence over the lives of their members.
ये हमारे पास families are exerting less influence over the lives of their members. Modern society is an other directed society where the behavior of a person is much influenced by the peer group who is found outside of the family. तो इसमें क्या होता है कि जो फैमिलीज़ होती हैं वो अगर हाई जो हमारी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर सारी की सारी सहूलियात होती हैं, अगर वहाँ पर रहने लग जाएँ तो उनके जो होते हैं न्यू जनरेशन जो अब वाली है, ठीक है, उनका जो है फिर ख़यालात, उनके जज़्बात, एहसासात, वो सारा कुछ जो है, उनके जो लाइक्स हैं, ये उनके स्टैंडर्ड्स, हर चीज़ जो है उनकी चेंज हो जाती है, उनकी हैबिट्स भी चेंज हो जाती हैं। उनके जो हैं नए जो उनके वो बन जाते हैं ख़यालात, ठीक है, और वो नए रिवाज बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास शिफ्ट टू वर्ड न्यूक्लियर conjugal families as an outcome of empirical regularity. There is a postulated universality of an unclear family as the traditional family system break down through with different speed in industrial society. Hiring is on the basis of competency. Efficiency is measured by individual performance. Job market requires mobility. None of these requirements need a strong kinship network. Industrializing societies create their other formal agencies to replace help from kinship networks. Individuals have independent careers and go their own way in ignoring extended kinship ties. Even in stress, nuclear family appears to be quite responsive to provide emotional support. नेक्स्ट है हमारे पास किन नेटवर्किंग फैडिंग एंड बीइंग रिप्लेस्ड बाय फ्रेंड्स नेटवर्किंग। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होता है इसके अंदर शिफ्ट टुवर्ड न्यूक्लियर, तो इसमें ये होता है कि कुछ सोसाइटीज़ होती हैं स्पेशली वो इंडस्ट्रियलाइज लोगों की होती हैं, ठीक है, जिनकी जो है अपनी कंपनीज होती हैं, बड़ा बड़ा जो जिनका बिजनेस होता है, फिर जो उनकी जो होती हैं हैबिट्स, उनके जो भी उनके कल्चर वगैरह होता है वो फिर इस दुनिया से और भी ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा जो है इसमें आ जाते हैं, हमारे जैसे मशीनरी वगैरह यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, और भी ज़्यादा जो है हाई फाई जो अच्छी वाली जो चीज़ें होती हैं उनकी तरफ जाते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स, उनके थॉट्स, उनके लाइक्स, और उनका जो है हर चीज़ चेंज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ये हमारे पास
People either depend on their own self or on their social capital of friends. तो यहाँ पे ये है कि जो भी फ्रेंड्स के साथ जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो भी एक फैमिली बन जाते हैं, ठीक है। तो वो एक नेटवर्किंग होती है कि वो बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं आपस में बात करते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। उनके भी आपस के ताल्लुकात में बहुत सारी हैबिट्स होती हैं, इस दुनिया से मुख्तलिफ़ लोगों से मुख्तलिफ़। उसके बाद जो है उनके जो लाइक्स हैं डिसलाइक्स हैं उनके हर चीज़ उनके जो नए से नए वो रिवाज बना रहे होते हैं अपने, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। Declining size of families with the societies moving toward modernization. There is a decline in the fertility of women in Pakistan from 6.3 million per woman in the 1970 we have come down to around 4 children per woman in 2000 for some of the reasons could be the rise in age at first marriage, decline in infant mortality, 140 over 1000 live births in 1970 to around 85 over 1000 in 2004. Next, increasing numbers of women, especially the older women, not desiring to get pregnant, and younger wanting to space births, decline in desired family size, use of contraceptive. All these reasons may have strong link with the education of families. There is an increase are in dual inner earner families. One could find a trend in the families where both husband and wife are working and sharing the household work, or if the wife is busy in the second shift to at home, the husband might also be having on a second job. ये था हमारा द राइज सिमेट्रिकल फैमिलीज़। तो अच्छा, इसमें होता क्या है कि जो फैमिलीज़ हस्बैंड एंड वाइफ जहाँ पर दोनों ही काम कर रहे हैं, मीन्स वो जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फिर वो घर का जो काम होता है डेली रूटीन का, वो फिर वो भी बांट के करते हैं। अगर वो हस्बैंड जो है वो घर में है, वाइफ बाहर है, तो फिर वो घर में जो है चाय बना के भी पिएगा और अपने लिए कुछ ना कुछ जो है बना के खाएगा। और जो वाइफ है अगर वो घर में होगी तो हस्बैंड बाहर होगा तो वो फिर घर के काम करेगी। और जो है हस्बैंड वो बाहर
जो भी अपना काम होगा या सेकंड शिफ्ट होगी वो उसे कंप्लीट करने के लिए जाएगा। नेक्स्ट है ये partiality on the decline as the proportion of dual earners marriage continues to increase women's financial dependence on their husbands declines, leading to a decline in party patriarchy in the changing scenarios. Instead of centralized decision making, families are moving toward shared decision making. Hence, patriarchy gives way to egalitarianism egalitarianism ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी होती हैं फैमिलीज़ वो अगर दोनों ही काम कर रहे हों ठीक है हस्बैंड वाइफ तो फिर ये होता है कि जो वाइफ है उसके लिए बहुत सारे वुमेन जो होती है उसके लिए बहुत सारे जो अखराजात हैं वो बढ़ जाते हैं। और उसके बाद जो है बिकॉज़ उन लोगों ने जो है बाहर जाना होता है इसलिए दोनों के ही अखराजात जो है थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और वो फिर दोनों ये इकट्ठे उन अखराजात को मुकम्मल करते हैं। Arranged marriages are being replaced by marriages of inclination. Traditionally, marriages of children were arranged by their parents, but now youngsters are trying to exert their personal choices in their matrimony। तो इसमें क्या है कि जो पहले अरेंज मैरिजेस होती थी ठीक है अब जो है वो जो चाइल्ड्स हैं वो खुद अपनी पसंद जो है वो बताते हैं और उसी के हिसाब से जो है वो शादी करना चाहते हैं। यही है अरेंज मैरिजेस आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय मैरिजेस ऑफ इंक्लिनेशन है कि अपनी तरफ से जो राय देना ठीक है। तो नेक्स्ट वो अपनी राय दे रहे होते हैं ठीक है और नेक्स्ट है उसमें ये लव मैरिज वाला जो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फ़िलहाल या मे बी हो भी सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इन द वेस्टर्न सोसाइटीज़ अल्टरनेटिव मैरिज अरेंजमेंट्स आर ऑन द इंक्रीज। फॉर एग्जांपल कॉमन लॉ मैरिज मैरिज विदाउट मैरिज लाइसेंस are not are on the increase। तो यहाँ पर क्या है कि बाहर के जो ममालिक हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर मैरिजेस के विदाउट लाइसेंस जो है वो चल रही होती हैं। मींस ये इस्लाम में तो जायज़ नहीं है लेकिन ये है कि नेक्स्ट है women empowerment। There is changing status of women due to the increase in literacy and in the level of literacy, financial independence and in their decision making power। इसमें क्या है कि जो हमारे वुमेन है लड़कियां हैं औरतें हैं ठीक है
उनकी जो लिटरेसी लेवल है, मीन्स उनकी स्टडीज़ एजुकेशन उनकी बहुत ज़्यादा जब हाई हुई, तो उसकी वजह से जो है उनकी एम्पावरमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो गई, और वो अब पहले से ज़्यादा जो है पावर में आ गई। अब वो अपने फ़ैसले और अपने लिए जो है हर तरह का जो फ़ैसला होता है वो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो चुकी है। Next, divorce rates have been increasing. There could be many reasons like individualism on the increase. People are looking for personal happiness. Romantic love often subsides. Marriages of inclination are relatively more vulnerable to conflict and divorce. Women now are less dependent on men. Many of today's marriages are successful since both husband and wife are working. Their jobs consume most of their time and energy. Then if they have to raise the children, there is not enough time and energy left to each for each other. Presently, divorce is becoming more socially accepted. It is no more considered a stigma. For legal standpoint, divorce is becoming easier to obtain. Couple may not have to resort to mud through throwing on each other. On the couple decides, and the court allows. नेक्स्ट है हमारे पास लॉन ओल्ड पेरेंट्स फैमिलीज ऑन द इंक्रीज। इसमें क्या होता है कि जो आजकल जो सेपरेशन वगैरह का दौर चल चुका है, ठीक है। तो जितने भी लड़के होते हैं वो अपनी फैमिलीज़ को लेके अलग हो जाते हैं, और जो होते हैं पेरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स जो होते हैं वो अलग से एक घर में रह रहे होते हैं। ये उसी के बारे में, ठीक है। तो ये इंक्रीज़ हो चुका है क्योंकि हर कोई जो है वो सेपरेशन चाहता है, और अपनी कुछ जो है वो प्राइवेसी की बातें करते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, हमें जो है सेपरेशन चाहिए, हम सेपरेट रह के जो है अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली एज द shelter for the aged is gradually eroding। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है, ये इन्होंने एक और बात कर दी है कि जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं वो क्या उन्हें जो है शेल्टर होम्स में ले जाके, ओल्ड शेल्टर होम होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ले जाके वहाँ उन्हें रख दिया जाता है। वो वहीं रहते हैं, अपनी लाइफ वहीं गुजारते हैं जो बच गई होती है। और जो है वो फिर जो फैमिली जो होती है वो उनके साथ रब्ता भी नहीं करती है, और यही इसी तरह से वो वहाँ पर रह रहे होते हैं।
और ओल्ड शेल्टर होम्स में ऐसे ही सारे के सारे जो ओल्ड होते हैं लोग, वो सारे के सारे वहाँ रह रहे होते हैं। Awareness of family violence has increased. Maybe in the changing situation, family violence has also increased. तो यहाँ पर ये है कि जो जैसे फैमिलीज़ जो होती हैं उनमें बातचीत बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है अवेयरनेस उन्हें नहीं रहती है एक दूसरे की, कि वो क्या कर रहे हैं उनके साथ, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये सारा कुछ जो है उन्हें मालूम ही नहीं होता है। जी, तो अचानक जो है ये कंप्यूटर हैंग हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे फिर कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर है द नंबर ऑफ एल्डरली मैरिजेज एंड री मैरिजेज is increasing. The people deciding to get married in their old age don't feel shy anymore, rather than leading a lonely life in case of their being divorced on or widowed. The elderly decide to get married. तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत एजिड होके शादी करते हैं और फिर वो एलोन ही रह जाते हैं, और उनके जो है और उनमें से कुछ का डिवोर्स हो जाता है और कुछ जो है वो किसी में जो है हस्बैंड और या वाइफ कोई भी जो है किसी की डेथ हो जाती है, तो वो विडो एक सूरत में जो है वो अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। उसके बाद क्या है, सिंस डिवोर्स डज नॉट अपीयर टू बी a stigma, therefore divorcees don't feel hesitant to remarry. तो यहाँ पर क्या होता है कि फिर इस तरह से जो है वो डिवोर्स वगैरह भी बहुत काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और उन्हें डिवोर्स लेने में कोई हेजिटेशन भी नहीं होती। Monogamy presumably becoming universal. There might be an increase in marriages, but the individuals are restricting themselves to one union at a time. So people marry, divorce, and remarry. But at a time, a person is married to only one partner, which may be called serial monogamy. तो इसमें क्या होता है कि मैरिजेज़ तो होती हैं, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। लेकिन ये मैरिजेज़ इंक्रीज़ हो चुकी हैं, और यहाँ पर जो है ये लोग जो हैं वो शादी करते हैं, फिर अगर डिवोर्स करने के फ़ौरन बाद फिर से शादी करते हैं, और इनमें जो है कोई भी पर्सन जो है किसी एक से ही शादी कर सकता है, और इसे जो है सीरियल मोनोगैमी कहते हैं। ये हमारे इस्लाम में तो नहीं चलता, लेकिन ये है कि ये वो उस पे चलता है,
हिंदू सोसाइटी में, बिकॉज़ उनका मानना है कि एक ही शादी की जा सकती है और दूसरी बीवी जो है वो नहीं ला सकते, इसलिए उनकी शादी एक ही होती है। और अगर जो है उन्होंने दूसरी शादी करनी हो तो वो पहले को डिवोर्स दे के फिर दोबारा शादी करते हैं। Lecture 30 Center a Social Construction. Behavioral differences between men and women, and biological basis, importance of socialization, and the learning of gender roles. Both gender and sex have no biological basis but are entirely socially constructed. तो नेक्स्ट ये जेंडर एंड बायोलॉजी, नेचर डिफरेंसेस इन बिहेवियर। जी, तो यहाँ पर है हमारे पास जेंडर सोशलाइजेशन। थ्रू सोशलाइजेशन चिल्ड्रन gradually internalized the social norms and expectations which are seen to correspond with their sex, hence differences in their behavior. तो नेक्स्ट है हमारे पास सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर एंड सेक्स। both sex and gender are socially constructed products. Not only is gender purely social creation that lacks fixed essence, yet the human body itself is subject to social forces which shape and alter it in various ways. Next ये biological determinants could hold one end of which and the other and could be held by social constructionists. constructionists यहाँ बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ये है हाईलाइट सिमिलरिटीज in male behavior across different environment. They argue that male traits have their roots in chromosomal differences or in hormonal differences or in some other normal characteristics that distinguish men from women. नेक्स्ट है ये सोशल constructionists contend instead that gender differences derive from social and cultural process. These processes create systems of ideas and practices about gender that vary across time and space. नेक्स्ट है हमारा masculinities refers to various socially constructed calculations
of assumptions, expectations, and ways of behaving that serve as standards for forms of male behavior. Next है masculinities and femininities are subject to change across culture and over time. जी, तो हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो 31st लेक्चर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि 45 मिनट्स का ये लेक्चर हो चुका है और मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं और पढ़ रही हूँ, मुझे इधर उधर की कोई होश ही नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।